ओके ओके मो कथा सुना होची हेलो Yes, sir. ओके सो लास्ट क्लास में कौन डिस्कशन करथिले फर्स्ट सेटा देखि दबा लास्ट क्लास में डिस्कशन करथिले व्हाट इज डिफरेंशिएबिलिटी गोटे पॉइंट रे गोटे फंक्शन ता केते बेले डिफरेंशिएबल होबो हमें एठु कोन जानथिले डेफिनेशन रो जदि सेही पॉइंट रे ए लिमिट ता एग्जिस्ट करबो ताहाले से डिफरेंशिएबल होबो तापर ये जत्ते बेले एई लिमिट ता को डिराइव करथिले एठु हमें दीते जिंस पाइथिले गोटे ला लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गोटे राइट हैंड डेरिवेटिव एबे हमें कोन जानछे जदि गोटे पॉइंट रे गोटे फंक्शन डिफरेंशिएबल हवा पाई हेले सेही पॉइंट रे बोथ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करथिबा दरकार क्लियर फर्स्ट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करूथिबा दरकार मींस दीटा जाको केही भी इनफाइनाइट हेउ नथिबो सेकंड थिंग कोन ए दीटार वैल्यू सेम होथिबा दरकार मींस एलएसडी सॉरी हां लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जहां बाहरची राइट हैंड डेरिवेटिव सेम बाहरुथिबो तापर एको नै कि आमे गोटे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन तार मीनिंग ता मु तुमु कहितली गोटे पॉइंट रे गोटे फंक्शन ता डिफरेंशिएबल हबा माने कोन सही पॉइंट रे मु से कर्व को गोटे यूनिक टैंजेंट ड्रा कर परबी ओनली सही पॉइंट रे गोटे ही टैंजेंट रहबो सेकंड थिंग और कोन कहि परबी सही पॉइंट ता केबे भी गोटे कॉर्नर पॉइंट हेइ नथिबो कि केबे भी एंड पॉइंट हेइ नथिबो क्लियर जानि पैलो देन कोन कहितले गोटे पॉइंट रे मु जत्ते बेले गोटे फंक्शन रो डेरिवेटिव भाग करछि गोटे पॉइंट रे जत्ते बेले मु गोटे फंक्शन रो डेरिवेटिव भाग करछि एक्चुअली मु कोन भाग करछि सेही पॉइंट रे से कर्व रो स्लोप ऑफ टैंजेंट भाग करछि सेही पॉइंट रे से कर्व को जो टैंजेंट ड्रा होछि तार स्लोप बाहर करछि क्लियर तापरे हम गोटे स्टेटमेंट टा को प्रूव करिया देखुतले गोटे पॉइंट रे गोटे फंक्शन जदी डिफरेंशिएबल होछि ताले सेही पॉइंट रे से बाध्य कंटीन्यूअस हबो किंतु तार उल्टाटा ता कन्वर्सटा हेई पारे न होई भी पारे ता माने गोटे फंक्शन जदी डिफरेंशिएबल से बाध्य कंटीन्यूअस हबो लक्ष्य करो आमे गोटे पार्ट कर देथिले गोटे पॉइंट टा को मु कनेक्टली सी पॉइंट रे डिफरेंशिएबल बोली अज्यूम करथिली एबे सेही पॉइंट रे कंटीन्यूअस बोली प्रूव करी देली एबे उल्टा पार्ट ता आमे प्रूव करिया ता माने कोन गोटे पॉइंट रे गोटे फंक्शन जदी कंटीन्यूअस होउची ताले सही पॉइंट रे से फंक्शन टा डिफरेंशिएबल हेई पारे न होई भी पारे एति की बुझियला यस और नो सर ओके सो एबे मु कन्वर्स पार्ट टा को चेक करबा कोन मु गोटे एमिति एग्जांपल टे नबी जो एग्जांपल रे मु देखै दिबे जे गोटे फंक्शन टा जदी गोटे पॉइंट रे कंटीन्यूअस होउची ताहाले से डिफरेंशिएबल हो नै किंतु सबु बेले डिफरेंशिएबल हबनी बेले माने किछ नै हेई पारे न होई पारे हमें भाबु देउछ ना लेट हमें भाबो स्कूल लेवल कथा हमें कोन कहतले लेट एबीसी गोटे राइट एंगल ट्रायंगल जदी एबीसी गोटे राइट एंगल ट्रायंगल होउची देन p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर हबो हमें उल्टा भी कहि दोउतले जदी p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर होउची हबो ताहाले एटा भी गोटे राइट एंगल ट्रायंगल हबो किंतु ये स्टेटमेंट ता समिति नुय नेसेसरी सफिशिएंट नुय इफ एंड ओनली वाला कंडीशन नुय ये कहूची जदी डिफरेंशिएबल हैला ताले बाध्य से कंटीन्यूअस हबो किंतु जदी कंटीन्यूअस होउची ताले से डिफरेंशिएबल हेई पारे न होई भी पारे सो मु कन्वर्स पार्ट को प्रूव करछि राइट कन्वर्सली राइट लेट f of x is equal to modulus of x at x equal to 0 ता माने मु एठी कोन कली गोटे एग्जांपल ता कंस्ट्रक्ट कली जो एग्जांपल रे मु प्रूव करबी जे एई फंक्शन ता मॉडुलस फंक्शन एको कोन कोंती मॉडुलस फंक्शन एई फंक्शन ता x इक्वल टू 0 रे कंटीन्यूअस हबो किंतु डिफरेंशिएबल हबो नाही सेटा प्रूव करिया ता पूर्व मु तुमको ज्योमेट्रिकली देखै दोछ भाबो तुम ऑलरेडी फर्स्ट ईयर रे पढी दैछो जदी ये मोर सॉरी गोटे मिनिट जस्ट स्ट्रेट लाइन ड्रा करे फर्स्ट ओके ये हला तुमरो कार्टेशियन प्लेन एबे मु कोन करछि एथि मॉडुलस ऑफ x रो ग्राफ टा ड्रा करदिली एटा कहार ग्राफ y = मॉडुलस ऑफ x एबे से कहूछि
x equal to 0 point कि से x equal to 0 এই পয়েন্টটা এই পয়েন্ট রে फंक्शन টা डिफरेंशिएबल हबो ना नाही कंटीन्यूअस हबो ना नाही मने पका हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन को मु जो ज्योमेट्रिकली कहितली जदी गोटे पॉइंट रे गोटे फंक्शन टा केते बेले कंटीन्यूअस हबो गोटे पॉइंट रे गोटे फंक्शन टा केते बेले कंटीन्यूअस हबो जदी मु सेही फंक्शन रो ग्राफ पेन न उठे कि कंटीन्यूअसली ड्रा करि परछु से पॉइंट रो नेबरहुड रे लक्ष्य गला मु पॉइंट रो नेबरहुड रे कंटीन्यूअसली ड्रा करि परछु ना पेन उठे को पडुची नाही ता माने जेहेतु मु पेन उठो नै ए फंक्शन टा 0 पॉइंट रे कंटीन्यूअस हे जिवो जानि हला देखि पहलो फिगर किंतु डिफरेंशिएबल हबो पे कोन कहितली जो पॉइंट रे डिफरेंशिएबल हबो से पॉइंट टा केबे भी गोटे कॉर्नर पॉइंट हेई नथिबो किंतु लक्ष्य गलो एटा गोटे कोन कॉर्नर पॉइंट हेला माने कोन हबो सेठी मोर देन वन टेंजेंट एग्जिस्ट करिवो सेठी फंक्शन टा केबे भी डिफरेंशिएबल हबो नै क्लियर एठु मु फिगर रु जानि पाइली ये फंक्शन टा डिफरेंशिएबल हबो नै किंतु कंटीन्यूअस हबो किंतु एटा को मते मैथमेटिकली देखेबार अछि बुझियला एते की हां कि ना Yes, sir. Again, sir. ओके एबे मैथमेटिक्स क्लास एबे मन पका मु एबे ए फंक्शन टा कंसीडर करछि एबे मते कोन करिवार अछि ए पॉइंट रे मींस x इक्वल टू 0 पॉइंट रे कंटिन्यूटी चेक करि अछि मन पका हमें कोन कहितले फर्स्ट तम नोट को जहारी कंटिन्यूटी हबा पई क्या मोर डेफिनेशन कोन थिला लक्ष्य करैठी गोटे पॉइंट रे गोटे फंक्शन कंटीन्यूअस हबा पई क्या हेले सेही पॉइंट रे मोर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू हबा दरकार और सिंपली लिमिटिंग वैल्यू इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू हबा दरकार सब बेले मन रखो जत्ते बेले मु गोटे पॉइंट रे कंटिन्यूटी बा डिफरेंशिएबिलिटी चेक करिया को जाउछ मोर फर्स्ट काम होला सेही पॉइंट रे आगो फंक्शनल वैल्यू बाहर करी आगो फंक्शनल वैल्यू बाहर करबी जदी सेही पॉइंट रे फंक्शनल वैल्यू टा एग्जिस्ट करूची ता माने इनफाइनाइट हो नाही और अनडिफाइंड हो नाही माने तार वैल्यू बाहरी जाउची ताहाले मु से जगह रे कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करी पारिबी जदी एग्जिस्टिंग ही करूनी कि डिफाइन हे पारुनी ताले मोर किछि चेक करे दरकार नै से जगह रे कंटीन्यूअस भी हबनी डिफरेंशिएबल भी हबनी जस्ट लाइक भाबो लेट तमको कह गला +2 गोटे पिला पढिया को जाउची गोटे पिला +2 पढिबो तार मिनिमम कंडीशन कोन से पिलाटा 10th पास करथिबो दरकार हों कि ना जदी से पिलाटा 10th पास करि नथिबो +2 केबे पढि परिबो कि केबे नै सो मेन कंडीशन कोन गोटे पॉइंट रे डिफरेंशिएबल और कंटीन्यूअस हबा पई कहले फर्स्ट सही पॉइंट रे फंक्शनल वैल्यू बाहरी परथुबा दरकार फंक्शनल वैल्यू डेफिनाइट वैल्यू होतबा दरकार गोटे फाइनाइट नंबर ता होतबा दरकार केबे भी इनफाइनाइट हो नथिबो कि अनडिफाइंड हो नथिबो क्लियर सो मोर फर्स्ट काम एबे कोन कंटिन्यूटी चेक करबा सो मु हेडिंग कर दूची कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0 ओके एबे कंटिन्यूटी चेक करिया पूर्वरु मोर काम होला फर्स्ट फंक्शनल वैल्यू बाहर करिया को पॉइंट रे मु कंटिन्यूटी चेक करबी को पॉइंट रे 0 पॉइंट रे सो मोर काम होला कोन 0 पॉइंट रे एबे मु फंक्शनल वैल्यू बाहर करबी नाउ f of 0 0 माने कोन x जगह रे मु लक्ष्य करो f of x केते मॉडुलस ऑफ x एठी f of x केते मॉडुलस ऑफ x ताले f of 0 कोन हबो मु x जगह रे 0 पुट कर देबी ताले मॉडुलस ऑफ 0 आसी गला केते 0 ताले ये बाहरी गला मोर फंक्शनल वैल्यू लक्ष्य करो फंक्शनल वैल्यू तार वैल्यू 0 भला ता माने गोटे फाइनाइट एग्जिस्ट करूछ ता माने मु आगु को जाई परिबी ताले कंटिन्यूटी चेक करबी कंटिन्यूटी को पॉइंट रे 0 पॉइंट रे ता माने लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट भा करबी सो एलएचएल लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f of x एबे मते को लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f of x रो वैल्यू केते हबो वर्किंग रूल ताल कोन लक्ष्य कर मु तुमको फर्स्ट रो कहितली फर्स्ट क्लास रे लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f of x केते आसीबो एटा हला तार वर्किंग रूल कोंती लिमिट h टेंड्स टू 0 f of a minus h लिमिट x टेंड्स टू a plus f of x यहला राइट हैंड लिमिट रो यार वैल्यू केते लिमिट h टेंड्स टू 0 f of a plus h सबु बळ पय मन रखितबो h टा मोर कोन
जेते छोटो पारिबो सेते छोटो पॉजिटिव रियल नंबर very small पॉजिटिव रियल नंबर पॉजिटिव केबे भी नेगेटिव हुए ताले सही बेस रे इटा को ब्रेक करो एठी मोर a किए 0 ताले मु कोन लिखिबी लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a जगह रे पुट कर देबी 0 0 minus h so which is equal to limit h tends to 0 लक्ष्य करो f of x वैल्यू केते mod x ताले f of minus h रे वैल्यू हबो केते मॉडुलस ऑफ माइनस h ताले लक्ष्य करो लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉडुलस ऑफ माइनस h केते जीवो h ताले h टेंड्स टू 0 ले यार वैल्यू बाहर गला 0 बुझी पाइलो सेकंड को असो RHL लेफ्ट हैंड लिमिट भाग ले बे कम भाग करबी राइट हैंड लिमिट नोटेशन कोन लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x टेंड्स टू 0 प्लस f of x which is equal to कितना सिवो limit h tends to 0 f of a plus h a जी कितने 0 so 0 plus h which is equal to limit h tends to 0 f of x वैल्यू कितने मॉडुलस ऑफ x f of h कितने आस जीवो मॉडुलस ऑफ h ताले यार वैल्यू कितने आसला लिमिट h tends to 0 मॉडुलस ऑफ h कितने h लक्ष्य कलो एठी लेफ्ट हैंड लिमिट जहा भाला राइट हैंड लिमिट से भाला ता माने मोर लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करूची लिमिटिंग वैल्यू केते जीवो 0 सो राइट हियर लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x केते बाहर ची 0 व्हिच इज आल्सो इक्वल टू f of 0 ताले मोर लिमिटिंग वैल्यू इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू हे गेला ताले फंक्शन टा मोर कंटीन्यूअस हबना नै हे गेला सो राइट so f of x is continuous at x equal to 0 मोर गोटे पार सइला ए एग्जांपल रो x equal to 0 पॉइंट रे फंक्शन दा कंटीन्यूअस हला बट एबे मते पुणी कोन चेक करिवार अछि ए फंक्शन दा डिफरेंशिएबल हबनी सो राइट डिफरेंशिएबल at x equal to 0 हमें चेक करिवा डिफरेंशिएबिलिटी at x equal to 0 0 पॉइंट रे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करिवा लक्ष्य करो सेम आगो मोर फर्स्ट काम होला फंक्शनल वैल्यू हा करिया ऑलरेडी मु बाहर कर देची x फंक्शनल वैल्यू केते 0 सो जेहेतु ये एग्जिस्ट करची एथर मु डेरिवेटिव डिफरेंशिएबिलिटी चेक करिया पे मोर कोन कंडीशन लास्ट क्लास रे कहितली डिफरेंशिएबल गोटे पॉइंट रे हबा पई का हेले सेही पॉइंट रे मोर कोन हबा दरकार कोठी लिखिची लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव बोथ एग्जिस्ट करथिबा दरकार ता सहित से दीटा वैल्यू इक्वल होथिबा दरकार ताले मु एबे कम भाग करबी 0 पॉइंट रे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भाग करबी राइट हैंड डेरिवेटिव भाग करबी सो फर्स्ट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नोटेशन कोन f डैश को पॉइंट रे चेक करबी 0 पॉइंट रे सो 0 माइनस फार्मूला माने पकाओ हमें लास्ट क्लास रे कहि देले f डैश c माइनस केते limit h tends to 0 f of c जे केते 0 0 minus h minus f of c जे केते f of 0 over minus h which is equal to केते आसीबो limit h tends to 0 f of minus h केते modulus of minus h f of 0 केते 0 over minus h which is equal to limit h tends to 0 modulus of minus h केते हमें जानि छे h over minus h h to cancel हो गेला ताले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव केते आसी गेला -1 सेम वे रे राइट हैंड डेरिवेटिव हा करो rsd करि परिबो यस और नहीं f dash 0 plus मते कोता फार्मूला केते हबो anyone limit anyone Ananya, then another one. Okay, अच्छा सबू. Aditya, good. Limit h tends to 0. F of plus h. c plus h. That means h minus f of 0 over h. Okay. Now put the value. So this is limit h tends to 0. F of h kete that is modulus of h.
minus f of 0 kete 0 over h. Now tell me what is modulus of h? So this is h over h, which is equal to 1. लक्ष्य करो एठी मोर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव केते आसिला -1, राइट हैंड डेरिवेटिव केते आसिला 1. ए दुटा सेम हेले की नहीं. No. So write here f dash 0 minus is not equal to f dash 0 plus. So जेहेतु दुटा जाक सेम हेलेनी आ फंक्शन टा डिफरेंशिएबल हबो कि therefore f of x is not differentiable at x equal to 0. बुझी पाइलो Yes, sir. ओके एकु ने कि ये तला से गोटे लॉन्ग टाइप किंतु एकु ने कि गोटे 1 मार्क क्वेश्चन भी पचार एग्जाम रे पचारथबो काउंसिल एग्जाम रे कौन पचारथबो 1 mark question. Give one example of a function. Give one example of a function which is continuous but not differentiable. हमें कौन जान से every differentiable function is continuous जदियो दे differentiable होउची ताल से बाध्य continuous होबो किंतु एठी उल्टा पचल्ला एमिति गोटे एग्जांपल दे को जे continuous होतबो किंतु differentiable होबनी हमें जो एग्जांपल टा कले कि से f of x is equal to modulus of x एति कि लिखिबनी मार्क केबे देबेनी को पॉइंट रे at x equal to 0 बुझियला at x equal to 0 मेंशन करिवो जानी पाइलो ये हला गोटे 1 मार्क रो क्वेश्चन काउंसिल रे बेले बेले पचार दिए ओके एबे आसो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कोन क्वेश्चन लेखो चेक द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी of following function at given point से कौन कहला एबे से किछिटा फंक्शन दबो गोटे पॉइंट देथिबो सेही पॉइंट रे तार कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करबा को हमकु पड़िबो ओके सो राइट द फर्स्ट बिट right f of x is equal to x minus 1 if x is less than 2 and 2x minus 3 if x is greater than equal to 2 at x equal to 2 एबे से कोन कहला मते फंक्शन टा दे देला मते ई फंक्शन टा दे देला कहिची एई फंक्शन रो 2 पॉइंट रे कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करिवो लक्ष्य करो फर्स्ट सबुठ इंपोर्टेंट हैला मु से फंक्शन को चिनिबा मते कहबो तो ए फंक्शन रो ना कोन एको को फंक्शन कोंदी एनीवन आदित्य कृपा सिंधु एनीवन के कहि परिवो अनन्य ए फंक्शन ना हला स्टेप फंक्शन कौन कहते एटा को स्टेप फंक्शन ठीक अछि मन रखि त ए फंक्शन ना कोन स्टेप फंक्शन जेमते एमती कर्ली ब्रैकेट भीतर थबो दी तीनटा हेई कि थिबो ताकू कहंती स्टेप फंक्शन क्लियर एबे कोन कहला एई फंक्शन रो को पॉइंट रे कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करियर अछि 2 पॉइंट रे सेति पई मोर फर्स्ट काम सब बेले गोटे क्वेश्चन को जते बेले आंसर लिखुछ सब बेले तार फर्स्ट काम हला कोन गिवन कोन अछि मेंशन करबा राइट पूरा प्रॉपर्ली लिखिबो we have f of x is equal to x minus 1 if x is less than 2 and 2x minus 3
if x is greater than equal to 2 एबे मु कंटिन्यूटी चेक करे या डिफरेंशिएबिलिटी चेक करे मोर फास्ट काम कोन कहितली कोन भाग करबा हुआ फंक्शनल वैल्यू गुड सो मोर फास्ट काम हला फंक्शनल वैल्यू राइट नाउ f ऑफ को पॉइंट रे चेक करे कहछि 2 पॉइंट रे f ऑफ 2 एबे मते एबे कह एठी मोर दीटा वे कहछि गोटे फंक्शन को केमिति डिफाइन करछि से कहछि जदी x वैल्यू 2 थारु छोटा ला फंक्शन वैल्यू किता हो x - 1 x वैल्यू जदी 2 की 2 थारु बड़ हला फंक्शन वैल्यू किता हो 2x - 3 ताले मते कहि परिबो f ऑफ 2 रो वैल्यू कोठा हो फर्स्ट टा को चूज करबी ना सेकंड टा को सेकंड टा गुड जदी x वैल्यू 2 हला फंक्शन वैल्यू किता आसीबो 2 * 2 - 3 दैट मींस किता आसीबो 2 * 2 - 3 व्हिच इज इक्वल टू 1 मोर फंक्शनल वैल्यू आसीगला एग्जिस्ट करूछि तो लक्ष्य करागो एग्जिस्ट करूछि तो ताहाले मु कंटिन्यूटी की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करबी नहले नाही ओके सो एग्जिस्ट जेहेतु करूछि एबे मु फास्ट हला डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर दोछि ओके हेडिंग दे देली डिफरेंशिएबिलिटी एबे डिफरेंशिएबल गोटे फंक्शन टा गोटे पॉइंट रे केते बळा हबो जदी सही पॉइंट रे LSD is equal to RSD हुए सो मोर फास्ट काम हला कोन LSD बाहर कर LSD रो नोटेशन कोन f डैश को पॉइंट रे चेक करिया देछि 2 पॉइंट रे दैट इज 2 माइनस व्हिच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 फार्मूला को f of c minus h means f of 2 minus h minus f of 2 over minus h जानि पइलो हां कि ना यस सर ओके सर फास्ट कंटिन्यूटी चेक करले किछि प्रॉब्लम अछि मा किछि प्रॉब्लम नाही किंतु गोटे जिनिस मा जानु था आमे कोन कहले गोटे फंक्शन ता डिफरेंशिएबल हे गेले कंटीन्यूअस हे जिवो क्लियर अगेन सर जदी मु देखि दउ जे फंक्शन ता डिफरेंशिएबल हे गेला मता किछि कंटिन्यूटी चेक करिया को पड़िबो नाही मु कोन कहि देबी डायरेक्ट ए फंक्शन ता कंटीन्यूअस हबो तू भी उल्टा वे रे कहि परबी मु कंटिन्यूटी चेक करछि जदी कंटीन्यूअस हबो नाही मु जानि देली ताले डिफरेंशिएबल भी हबो नाही क्लियर जदी आଜ୍ଞା। कंटीन्यूअस हेई गला मु किछि डिफरेंशिएबल विषय कहि परिबिनी मते पुणे डिफरेंशिएबल चेक करिया को पड़िबो तो इच्छा मते जोउटा को चेक करि परिबो कंटिन्यूटी चेक कर देलु जदी आगो देखि देलु कंटीन्यूअस हेई गला किछि फायदा नै मते पुणे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करिया को पड़िबो क्लियर जदी जानि पाइलु अरे हे ये कंटीन्यूअस होउनी बा ताले बाध्य ये डिफरेंशिएबल भी हबोनी आ मते चेक करिया को पड़िबा नै जानि हला आगे सर ओके सो चलो क्वेश्चन टा लिखो देखिया मु डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेगा तो कंटिन्यूटी भी चेक कर ले किछि असुविधा नहीं सो व्हिच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 लक्ष्य करो एबे मते स्टेप फंक्शन टा को f of 2 minus h ता माने कोन एबे कोन लक्ष्य करो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो या लेफ्ट हैंड लिमिट हो सेटा कोन 2 थारु छोटो बेले जो पॉइंट रे डिफाइन हिची ता थारु छोटो बेले को हबे x वैल्यू जतले 2 थारु छोटो फंक्शन वैल्यू केते आसीबो x - 1 गुड वर्तमान मो पे x के 2 - 1 2 - h so this is 2 minus h just wait so this is 2 minus h minus 1 so this is x minus 1 minus f of 1 value kete sorry f of 2 value kete 1 over minus h so which is equal to limit h tends to 0 कौन है लाठी 2 - 2 कैंसिल हो गला रहिला केते -h over -h which is equal to केते आसी गला 1 मोर LSD बाहर गला एबे मोर काम कोन RSD so right f dash 2 plus limit h tends to 0 f of 2 plus h minus f of 2 over h. Now tell me what is the value of f of 2 plus h f of 2 plus h ର value केते मते स्टेप फंक्शन टा को देखि को 2 into 2x plus h right hand derivative ता माने 2 पॉइंट रे मो right hand derivative हा कोछि ता माने 2 पॉइंट रो राइट साइड रे 2 थारु बडा होबा दरकार ताले 2 थारु बडा किए ए गुटा को ताले फंक्शन वैल्यू केते आसे जीवो 2x - 3
So this is 2 whole into x means 2 plus h minus 3. Clear? Then f of 2 ର value केते 1 over h. लक्ष्य करो 2 into 2 4 minus 4 cancel हो गला. So limit h tends to 0 रह गला केते 2h by h. h cancel हो गला रह गला केते 2. जानि पाइलो केते हो गला 2. एटी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव हैला की ना. So here f dash 2 minus is not equal to f dash 2 plus. तला function differentiable होगा की therefore f of x is not differentiable at x equal to 2. लक्ष्य करो 2 पॉइंट रे differentiable हैला नहीं. एबे मु किछि continuity विषय रे कहि परिबि कि continuous होबो कि नहीं कहि परिबि कि किछि कहि परिबिनी. मु जानि छि कोन differentiable हेले continuous होबो किंतु differentiable तो हैला नहीं. ताले continuity विषय रे कोन कहिबि किछि कहि परिबिनी. ताले पुन चलो आगु को ताले मते पुन continuity चेक करिया पड़िबो. हेडिंग दियो continuity. ओके सो कंटिन्यूटी कौन भाग करी स्टेप फंक्शन माने एलएचएल भी भाग करी आरएचएल भी भाग करी. एलएचएल लेफ्ट हैंड लिमिट भाग करिया लिमिट को पॉइंट रे चेक करिया कोइची 2 पॉइंट रे 2 माइनस एफ ऑफ एक्स व्हिच इज इक्वल टू केते असला मते वर्किंग रूल को मु कहितले आउ टिके पूर्वरु लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h. कॉपी देखो limit h tends to 0 f of मते को f of 2 minus h रो वैल्यू केता हो 2 थारु छोटे ले फंक्शन वैल्यू केते x minus 1. ताले एठी मु केते लिखिबी 2 minus h minus 1. ताले कोन हे गेला h j tends to 0 गेले 2 minus 1 केते आसी गेला 1. एबे कोन चेक करबी rhl limit x tends to 2 plus f of x which is equal to केते असला limit h tends to 0 f of 2 plus h. So right hand limit माने कोन 2 थारु बडो हां कि ना 2 रो राइट साइड रे सी अछि. लक्ष्य कलो एठी 2 थारु बढाइले फंक्शन वैल्यू केते हबो 2x minus 3. 2x minus 3 हला को एठी मु केते लिखिबी 2 into x जगह केते अछि 2 plus h minus 3. ताले h tends to 0 हे गेले 2 minus 3 वैल्यू केते जिवो 4 minus 3 केते हे गेला 1. हां कि ना एबे को मोर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हला हां कि ना. यस सर. ता माने मोर लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कोला फंक्शन टा कंटीन्यूअस होबा पे कोन कहितली लिमिटिंग वैल्यू इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू होबा दरकार. लक्ष्य कलो एठी मोर फंक्शनल वैल्यू ऑलरेडी केते बाहरी ची 1. ताले लिमिटिंग वैल्यू इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू हे गेला. यस और नो. सो राइट therefore or he write here limit x tends to 2 minus 2 लिख दियो f of x is equal to 1 which is also equal to f of 2. So limiting value equal to functional value. So f of x is continuous at x equal to 2. बुझी पाइलो यस सर. अच्छा मने पकाओ मु आ गोटे बढ़िया जिंसटे 1 मार्क क्वेश्चन एटा भी पड़े गोटे तुमरो फर्स्ट ईयर रे थिला कंट्रापोजिटिव लॉजिक पढिछ फर्स्ट ईयर रे. फर्स्ट ईयर गोटे लॉजिक थिला लॉजिक पढितबो लॉजिक रे गोटे रूल थिला कंट्रापोजिटिव. कंट्रापोजिटिव से कोन कहूची कंट्रापोजिटिव रूल से कहूची जे जदि मोर p कंडीशनल q अछि ये कहा सहित इक्विवेलेंट नेगेशन q कंडीशनल नेगेशन p सहित ये दीटा जको इक्विवेलेंट जानि पाइलो मते को तो नेगेशन p q माने कोन जानि छ ना नहीं हां कि ना जस्ट जानि छ. ताले जदि हमें गोटे स्टेटमेंट कोन जानि छे इफ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन इट इज कंटीन्यूअस.
if a function is differentiable then it is continuous ता माने p कोन a function is differentiable q कोन a function is continuous ताले negation q कोन आस जीवो not continuous negation p कोन आस जीवो not differentiable ओके ताले एठु मु कोन जानिली लक्ष्य करो जेमति तमे कहउथलो एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटीन्यूअस ता माने जदि गोटे फंक्शन डिफरेंशिएबल होची ताल से बाध्य कंटीन्यूअस हो सेमति मु कोन कहि परिबी जदि गोटे फंक्शन कंटीन्यूअस हो नाही ताले से केबे भी डिफरेंशिएबल हबो नाही एटा को ठीक से मने रखियो एटा को नोट कर दोची राइट इफ ए फंक्शन इज not differentiable at a point, then sorry I think both भूल लिखी दिन ना it is not continuous and not differentiable if a function is not continuous at a point then it is not differentiable सबु बेले मन रखिबो एटा को नेकी गोटे 1 मार्क क्वेश्चन भी तम बुक रे अछि एलिमेंट्स रे 7k रो एक नंबर केते बिट मु एग्जैक्टली कहि पाउनी बट ए स्टेटमेंट को यूज करि के हबो हमें कोन जानले एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटीन्यूअस किंतु जदी कंटीन्यूअस हैला कोन हबो मु जाननी सिमिलरली कोन कहि परिबो जदी गोटे फंक्शन कंटीन्यूअस हबो नाही ताल से केबे भी डिफरेंशिएबल हबो नाही उल्टा हले मु कहि परिबिनी ता माने कोन जदी डिफरेंशिएबल हो नाही ताले कंटीन्यूअस हेई पारे न हेई पारे मु जाननी बुझी पाइलो एबे तमरा क्वेश्चन रो सेकंड बिट को आसी कोन कहूची क्वेश्चन लेट f of x is equal to 1 over x at x equal to 0 एबे मते कोन करिवार अछि 0 पॉइंट रे ए फंक्शन रो कंटिन्यूटी आउ डिफरेंशिएबिलिटी दीटा जाक चेक करिवार अछि तमरा फर्स्ट काम कोन राइट वी हैव जहा गिवन अछि f of x is equal to 1 over x मोर फर्स्ट काम कोन कंटिन्यूटी हो या डिफरेंशिएबिलिटी हो कोन चेक करबी functional value good now f of 0 केता आसिला देखला 1 over 0 आउ एग्जिस्ट करूची की नो सर जेहेतु एग्जिस्ट करनी मु कंटिन्यूटी की डिफरेंशिएबिलिटी किछि चेक करबा दरकार नहीं से कोन है जीवो ना कंटीन्यूअस हबो ना डिफरेंशिएबल हबो राइट therefore f of x is neither continuous nor differentiable at x equal to 0 सइला जेहेतु से पॉइंट रे फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट करू नाही मोर किछि चेक करबा दरकार नाही से कोन है जीवो कंटीन्यूअस हबनी कि डिफरेंशिएबल भी हबो नाही जानियला थर्ड right f of x is equal to x square sin 1 over x if x is not equal to 0 and 0 if x is equal to 0 at x equal to 0 same x equal to 0 point रे मते कंटिन्यूटी आउ डिफरेंशिएबिलिटी दीटा जाक चेक करियार अछि सो तमरो फर्स्ट काम कोन राइट द स्टेटमेंट फर्स्ट हे गेला को पॉइंट रे मते चेक करबा को कहिची को पॉइंट रे 0 पॉइंट रे सो 0 पॉइंट रे फंक्शनल वैल्यू आगे बाहर कर दियो नाउ f of 0 एबे देखि कहलो मोर f of 0 रे वैल्यू केता हो स्टेटमेंट को देखि को if x equal to 0 फंक्शन वैल्यू केते केते इति लिखाई छी जदी x equal to good so f of 0 is equal to 0
ताले फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट करियला एबे मु कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करबी मेक ए हेडिंग डिफरेंशिएबिलिटी मोर डिफरेंशिएबल चेक करे पे फास्ट काम कोन एलएसडी आरएसडी चेक करबा एलएसडी आसिला नोटेशन कोन f dash 0 minus फॉर्मूला मोर कोन लिमिट h tends to 0 f of 0 minus h minus f of 0 over minus h लक्ष्य करो लिमिट h tends to 0 हे गला f of x not equal to 0 ले x not equal to 0 ले फंक्शन वैल्यू केते फंक्शन वैल्यू केते x square sin 1 by x ताले ठी x जगह रे केते अछि minus h रो स्क्वायर sin 1 by x जगह रे केते पुट करबी minus h minus f of 0 केते 0 over minus h बुझी पाइले थे कि yes or no Yes, sir. so which is equal to limit h tends to 0 लक्ष्य करो माइनस h रो स्क्वायर केते आसी गला h स्क्वायर आमे आगोटी जानि छे कोन sin ऑफ माइनस थीटा केते sin ऑफ माइनस थीटा केते cos theta व्हाट minus sin theta. माइनस sin थीटा कोन कहू रे बाबू sin ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस sin थीटा ताले sin ऑफ माइनस 1 by h इज इक्वल टू माइनस sin 1 by h ताले माइनस आसी गला sin 1 by h over minus h लक्ष्य करे ठुमर कोन हबो minus h कैंसिल हे गला रहिला कोन लिमिट h tends to 0 h sin 1 over h एतिक जानि गला so which is equal to मेटो एमिति ब्रेक करि परिबी की देखिला लिमिट h tends to 0 h into limit h tends to 0 sin 1 over h ठीक अछि एबे लक्ष्य करो जदि h tends to 0 हे गला ताले यार वैल्यू केते जो फर्स्ट लिमिट रो वैल्यू केते जीवो 0 into सेकंड टर वैल्यू केते हो एटा हला इंपोर्टेंट मोर h tends to 0 दे दिछ ता माने h टा बहुत छोटे छोटे नंबर टे 1 by h केते जीवो बहुत बड़ नंबर से जहा होची हो जेहेतु एठी मोर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन sin अछि sin फंक्शन रेंज केते -1 to 1 क्लोज इंटरवल Minus 1 to 1. बहुत ता माने जहा भी sin रो वैल्यू आसीबो sin 1 by h रो वैल्यू आसीबो केते रु केते भीतर रहबो -1 रु 1 भीतर रहबो मु सेटा को केमिति लिखिबी राइट एंड ऑसिलेटिंग वैल्यू between -1 and +1 हेगला ताहाले मु कोन कहली ये sin 1 by h वैल्यू जहा होची हो h जुआडे जाउची जाउ सब बेले -1 रु +1 भीतर रहबो जेहेतु -1 रु +1 भीतर रहिला लक्ष्य करलो एठी कहा सहित से मल्टीप्लाई हेची 0 0 को मु -1 रु +1 भीतर जहा सहित मल्टीप्लाई करे तार वैल्यू केते आसीबो 0 यस और नो ओके ताहले मोर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वैल्यू एठी केते होला 0 सेम वे रे राइट हैंड डेरिवेटिव भाग करिया राइट हैंड डेरिवेटिव नोटेशन कोन f dash 0 plus which is equal to केते आसला लिमिट h tends to 0 f of 0 plus h minus f of 0 over h which is equal to केते आसला लिमिट h tends to 0 f of h रो वैल्यू केते लक्ष्य करो x not equal to 0 ले फंक्शन वैल्यू केते देखितले x square sin 1 over x ताले t x जगह रे केते लिखिबी h square sin 1 over h minus f of 0 हे गेला 0 over h लक्ष्य करो एठी h कैंसिल हे गेला रहिला कोन लिमिट h tends to 0 h sin 1 over h एटा को पुणी ब्रेक करो जेंति प्रीवियस फंक्शन ने करथिले एलएसडी रे
limit h tends to 0 h into limit h tends to 0 sin 1 by x सेम वे रे कहि परिबी फर्स्ट टर्म रो लिमिट रो वैल्यू केते हे गला 0 सेकंड टा कोन हबो मते को जहा प्रीवियस रे हितला sin 1 over h h मोर जहा कहउची हो जो टेंस करछु करू sin जेहेतु अछि यार रेंज केते -1 1 भीतर से ऑसिलेट हबो राइट an oscillating value between -1 and +1 0 को ता से तो मल्टीप्लाई कर देले केता आसीबो 0 लक्ष्य करो ताहले मोर एठी कोन हैला LSD is equal to RSD हे गला हां कि ना here f dash 0 minus is equal to f dash 0 plus ताहले फंक्शन रा एठी कोन हबो डिफरेंशिएबल हे जिवो so f of x is differentiable at x equal to 0 मने पकेले हमें कोनटे पढी थले every differentiable function is yes continuous जेहेतु ये डिफरेंशिएबल हे गेला ताले ये कोन हबो कंटीन्यूअस हबो तेनु मता कंटिन्यूटी चेक करिवार नाही मु डायरेक्ट भी लिखिबनी फर्स्ट मु स्टेटमेंट लिखिबी मैथ रे विदाउट रीजन रे किछि तमे लिखिबो नाही लिखिबो we know that every differentiable function is continuous रीजन सब वाला पई फर्स्ट मैथ रे आगो रीजन लिखिबो तापरे जहा लिखिया कथा लिखिबो जानियला Yes. therefore जेहेतु ए स्टेटमेंट लिखिलो तापर लिखिबो therefore f of x is continuous at x equal to 0 हे गला बुझी पाइलो डिफरेंशिएबल हे गला माने मत आ किछि कंटिन्यूटी चेक करिया दरकार नै डायरेक्ट मेंशन f of x ता कंटीन्यूअस हबो जानि होची नेक्स्ट क्वेश्चन को आसो हमरा केते बिट जाइतला ये थर्ड बिट नेक्स्ट फोर्थ बिट को सॉरी f of x is equal to sin गोटे काम करा और टिके चेंज कर दबा एटा को आउट लेख फोल्ड ऑन f of x is equal to x sin 1 over x if x is not equal to 0 if x is equal to 0 at x equal to 0 सेठी थिला कोन x स्क्वायर एठी कोन अछि x को पॉइंट रे चेक करिया देछि सेम 0 पॉइंट रे so right we have f of x is equal to this ओके लेखा सैला समस्तंगर Yes, ओके sir. एबे कोन करिवा मोर फर्स्ट काम कोन फंक्शनल वैल्यू बा करिया राइट नाउ f of 0 which is equal to x equal to 0 ले फंक्शनल वैल्यू केते 0 हां कि ना एबे मु कोन बा करबी लिमिटिंग वैल्यू सॉरी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करबी कंटिन्यूटी चेक करबी लक्ष्य करो एठी जेहेतु एग्जिस्ट करछि मु डायरेक्ट चली डिफरेंशिएबिलिटी चेक करिया पय का हेडिंग दे दियो डिफरेंशिएबिलिटी डिफरेंशिएबिलिटी रे में कोन करे LSD RSD हेडिंग दे दियो LSD मींस केते f dash 0 minus which is equal to फॉर्मूला डाक आदित्य फॉर्मूला डाक मते कह लिमिट h tends to 0 f of
yes आदित्य c minus h c minus h जी कितने minus h minus f of 0 over minus h which is equal to limit h tends to 0 f of minus h ର value केते हबो को x not equal to 0 ले function ର value केते x sin 1 over h ताले एठी x के minus h x के minus h so this is minus h sin 1 over minus h f of 0 ର value केते 0 divided by minus h लक्ष्य कलो मोर minus h कैंसल हो गला किंतु मु पुणी कोन देखिली sin of minus theta र वैल्यू केते sin of minus theta र वैल्यू केते minus sin good ताले एटी मोर कोन आसला minus limit h tends to 0 sin 1 over h हमें पुणी गोटे एमते देखितले लास्ट क्वेश्चन रे कोन देखितले जदी h tends to 0 हला sin 1 over h कोन हबो एटा तो माइनस हला sin 1 over h र वैल्यू केते रु केते भीतर रहइबो -1 to 1 good and oscillating value between -1 and +1 लक्ष्य करो यार माइनस अछि एलएसडी जेतले भाला माइनस ऑफ दैट -1 रु +1 भीतर आसीबो बेली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मु जानिली मते कहलो को गुटा को आसीबो कहि परिबो की को गुटा को आसीबो कहि परिबो की -1 -1 रु +1 भीतर आसीबो को गुटा को -1 रु +1 भीतर तो बहुत सारा नंबर इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स अछि किंतु को गुटा को हबो किए कहि परिबो की केही कहि परिबेनी लिमिटिंग वैल्यू कोन गोटे पर्टिकुलर वैल्यू होबो दरकार ये किछि गोटे पर्टिकुलर वैल्यू आंसर आसिला की ना ना जेहेतु आसिलानी को वैल्यूटा हबो मु जानि परिबी की जानि परिबेनी ताहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एठी आउ एग्जिस्ट करला की मते जन पचरे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव केते भाला मु कहि परिबी की को पॉइंटटा भाला कहि परिबेनी मु जानिली -1 रु +1 भीतर हबो किंतु कोउटा हबो जानि परिबिनी सेति बेका मु एठी कोन कहबी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मोर एग्जिस्ट करला नाही जदी गोटिए वैल्यू भारतंदा केवल गोटिए 5 भाला 3 भाला 0 भाला ई भाला ताहले कहिथानी मोर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एति किंतु एठी तो गोटिए भावनी -1 रु +1 भीतर केते सारा नंबर अछि ता भीतर कोठा हबो केबे कहि परिबी की केबे कहि परिबिनी तेनु लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मोर एग्जिस्ट करला नाही सो f dash 0 minus does not exist जानी पाइलो मीनिंग कोन पाई एग्जिस्ट करला नहीं यस सर ओके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करला नहीं राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करू कि नहीं एग्जिस्ट मन कर भी करि गला ताले फंक्शन टा डिफरेंशिएबल हबो की ना गुड कोन पाई हमें कहितले गोटे पॉइंट रे गोटे फंक्शन डिफरेंशिएबल हबा पाई हेले सही पॉइंट रे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव बोथ एग्जिस्ट करूथिबा दरकार एग्जिस्ट कला पर से माने इक्वल हेबे कि न हेबे से अलगा कथा जेहेतु एग्जिस्ट करूनी ताले फंक्शन आउ डिफरेंशिएबल हबो नहीं therefore f of x is not differentiable at x equal to 0 differentiable हेला नहीं कंटीन्यूअस हबो कि नहीं कहि परिबो नहीं ना ताले एबे पुणी मु कोन करबी कंटिन्यूटी पुणी चेक करबी कंटिन्यूटी चेक करे भाई मु ऑलरेडी तो फंक्शनल वैल्यू बाहर कर देछि एबे कोन बाहर करबी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सो लक्ष्य कर केमिति बाहर करिया लिमिट x tends to 0 minus f of x which is equal to कितना आसीबो limit h tends to 0 f of 0 minus h which is equal to किते limit h tends to 0 f of minus h रा वैल्यू केते लक्ष्य करो हमें क्वेश्चन ऑलरेडी कहचे f of minus h रा वैल्यू केते हबो x जगह मु माइनस पुट कर देबी -x
sin 1 over minus x minus h sin 1 over minus h. So मते पुणी को sin of minus theta रे वैल्यू केते minus sin theta ताले लिमिट h tends to 0 ये हे गला मोर केते h sin 1 over h which is equal to केते आसीबो सेंति ब्रेक करो limit h tends to 0 h into limit h tends to 0 sin 1 over h which is equal to केते आसला 0 सेकंड टा कोन कहितली an oscillating value between -1 to +1 good ताले 0 into जहा मल्टीप्लाई कर देले केते हे जीवो 0 ताले लेफ्ट हैंड लिमिट रे वैल्यू मोर 0 बाहरी गला एबे मु कोन भाग करबी राइट हैंड लिमिट हेडिंग दे दियो राइट हैंड लिमिट कोन हबो लिमिट x tends to 0 plus f of x which is equal to केते आसीबो limit h tends to 0 f of 0 plus h केते आसला पुनी limit h tends to 0 f of h रहले केते हबो h sin 1 over h पुनी ब्रेक कर दियो limit h tends to 0 h into limit h tends to 0 sin 1 over h ताले यार वैल्यू तो 0 सेकंड टर वैल्यू केते सेम and oscillating value between -1 and 1 so लक्ष्य कलो यार वैल्यू भी केते आसी गला 0 लेफ्ट हैंड लिमिट 0 राइट हैंड लिमिट 0 लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करिवो ना नहीं एग्जिस्ट करिवो सेटा इक्वल टू केते हला फंक्शनल वैल्यू हिला की हे गला yes sir ताले फंक्शन नंबर कोन हे जीवो कंटीन्यूअस एबे सेउटा को मेंशन करो हियर लिमिट x tends to 0 f of x is equal to 0 which is also equal to f of 0 ताले फंक्शन मोर कोन हे जीवो कंटीन्यूअस therefore f of x is continuous at x equal to 0 सैला एटा बुझियला yes sir एबे मते गोटे क्वेश्चन को तो तमे फर्स्ट ईयर रे गोटे जानिछ कि सैंडविच थ्योरम सैंडविच लॉ जदी sir. जानि जानिछ नहीं sir जानि न जदी नहले जानिथले एटा बहुत इजी रहि जाय थाना ओके नहले एंती करो चलिबो किछ असुविधा नै सैंडविच थ्योरम गोटे अछि सेटा हिसाब रे एटा मोटू अल्प के रहि जाय थांदा था जानि न तो ए हिसाब रे कर दियो नो प्रॉब्लम किछ असुविधा नै जानियला नेक्स्ट क्वेश्चन this one is the fifth bit okay f of x is equal to modulus of x over x if x is not equal to 0 1 if x is equal to 0 ठीक अछि 8 x is equal to 0 गोटे काम करना एटा को 0 कर दियो आ टिके तुमको छाड़ 1 लिखिछ तो लिखो नो प्रॉब्लम किछ असुविधा नाही किछि असुविधा नाही कोन करबा सो मोर फर्स्ट काम लिखि दबो गिवन दैट f of x is equal to this ओके एबे लक्ष्य करो कोन कहिछि मु 0 पॉइंट रे कंटिन्यूटी आ डिफरेंशिएबिलिटी चेक करबी सो मोर फर्स्ट काम कोन फंक्शनल वैल्यू एबे कहलो मते फंक्शनल वैल्यू f of 0 केते आसे जेबो 0 पॉइंट रे फंक्शनल वैल्यू केते 1 आ फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट करी गला ओके सो नेक्स्ट एबे काम होला डिफरेंशिएबिलिटी चेक करबा हेडिंग दे दियो LSD f dash 0 minus
केते आसीबो को फार्मूला लिमिट h tends to 0 f of 0 minus h minus f of 0 over minus h, which is equal to limit h tends to 0. एबे लक्ष्य को f of minus h रो वैल्यू केते minus h माने कोन फंक्शन ऑफ वैल्यू x not equal to 0 हेले फंक्शन ऑफ वैल्यू केते मॉडुलस ऑफ h by h ताले केते लिखिबी मॉडुलस ऑफ minus h by minus h minus f of 0 वैल्यू केते 1 divided by minus h बुझी पाइलो हां कि ना Yes, sir. ताले एबे सिंपलीफाई करो which is equal to limit h tends to 0 modulus of minus h केते h divided by minus h minus 1 by minus h. So numerator को लक्ष्य करो केते हला limit h tends to 0 h by minus h केते आसी गला minus 1 divided by minus h केते कहि परिबी ए limit h tends to 0 minus 2 by h ताले मु गोटे काम करछि 2 by h कहि परिबी हां कि ना अच्छा लक्ष्य कलो जदी h tends to 0 हला ताले एठी आउ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करिवो की नहीं. लक्ष्य करो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आउ एग्जिस्ट करूनी राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करू कि नहीं फंक्शन आउ डिफरेंशिएबल हबो No. सहीला so right therefore so f of x is not differentiable at x equal to 0 डिफरेंशिएबल हैला नहीं कंटिन्यूटी से हिसाब रे चेक करिया पुनी बाध्य मु तो कंटिन्यूटी चेक करबी कारण डिफरेंशिएबल मु किछि जानि पाइलेनी नेक्स्ट कंटिन्यूटी एबे कंटिन्यूटी रे कोन करबी फंक्शनल वैल्यू तो एग्जिस्ट करि अछि एबे बाहा करबी कोन लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एलएचएल चेक करो केते आसीबो लिमिट कोन कहबी लिमिट x tends to 0 minus f of x which is equal to limit h tends to 0 f of 0 minus x so limit h tends to 0 f of minus h केते देखिछि फंक्शन देखिलो मॉडुलस ऑफ x ओवर x ताले मु केते लिखिबी मॉडुलस ऑफ माइनस h ओवर माइनस h मॉडुलस ऑफ माइनस h केते h ओवर माइनस h केते आसी गेला यार वैल्यू -1 सिमिलरली मु कोन भाग करी पुनी राइट हैंड लिमिट केते ये लिमिट x tends to 0 plus f of x which is equal to limit h tends to 0 f of 0 plus h which is equal to limit h tends to 0 f of 0 plus h ର value f of h ର value केते modulus of h over h लक्ष्य कला एठी modulus of h ର value केते h over h केते आसी जिवो 1 एथर को लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करला की लेफ्ट हैंड लिमिट केते बाहरची -1 राइट हैंड लिमिट केते बाहरची +1 आउ लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करिवो नहीं No. so right here limit h tends to 0 f of x does not exist लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करूनी ताले फंक्शन टा कंटीन्यूअस हबो की No. so right so f of x is discontinuous at x equal to 0 लक्ष्य करो यही क्वेश्चन रे जदि मु आग कंटिन्यूटी टा चेक करि देई थांती ताले मु जानि देई थांती कोन कंटीन्यूअस नुह बोली
जेहेतु कंटीन्यूअस नो ताले फंक्शन टा केबे भी डिफरेंशियल हेई थांता ना मत आउ सेटा चेक करे पड़े न थांता किंतु एटा को क्वेश्चन हबो टिके डिफिकल्ट जानिबा सेति पे आगो डिफरेंशियल चेक करो या कंटिन्यूटी चेक करो नो प्रॉब्लम जानि पैलो यस सर अच्छा मोर आउ गोटे क्वेश्चन अछि एठी हमें सबु बेले लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट किंतु लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव मु सबु बेले बाहा करी बाध्य किंतु कंटिन्यूटी जेतेबेले मु चेक करूची मु कहूची लिमिटिंग वैल्यू बाहा करे लिमिटिंग वैल्यू कोन सबु बेले एलएचएल आरएचएल नै कि बाहर करबी सेमिति नाही लक्ष्य करिवो जो जगह रे चारिटा फंक्शन थबो एई चारिटा को चारिटा ना ठीक से कहूची लक्ष्य करो फर्स्ट वन इज step function second one modulus function third one greatest integer function fourth one exponential function लक्ष्य करिवो जो जगह रे एई चारिटा फंक्शन थिबो ताहले मु एलएचएल आरएचएल बाहर करी जदी एई चारिटा फंक्शन नाही डायरेक्ट तमे लिमिटिंग वैल्यू बाहर कर देई पारिबो जानि पैलो यस सर अच्छा लक्ष्य करिवो तमरे एलिमेंट्स रो जो ना फर्स्ट चैप्टर अछि 7a 7a रे एक नंबर टा जेते आसुची कर दियो बुझी पाइलो आई थिंक किछि किछि एबे हे जिवो तापर आ किछिटा पढिला परे काली बदे मु क्लास नेमी 9 टा को पुनी काली हमें आ किछटा पढले हे जिवो टोटल जानि पाइलो यस सर ओके सो आज मैं एतिक थाउ सो टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू ऑल थैंक यू सर